Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video I would like to discuss one of the important topic, that is quasi contract. The meaning of quasi contract and the circumstances which are identified as quasi contract by the Indian Contract Act 1872. This is your lecture number 8, chapter 2, syllabus 2016. This topic already comes in December 2018 examination, which is carries 10 marks. So very important for your examination point of view. So without any further delay, let's get started. In Indian Contract Act 1872, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक वेल डिफाइन हुआ है अबाउट क्वासी कंट्रैक्ट. सेक्शन 68 टू 72. ओके, क्वासी कंट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है. रिमेंबर, क्वासी कंट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है. राइट. सो as we know that a valid contract must be enforceability by law. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए एंड इसके लिए भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट भी होना चाहिए, लाइक फ्री कंसेंट, वैलिड कंसिडरेशंस, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये सब एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो सकता है. बट इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ there are no such essential elements, it will be called valid contract in case of quasi contract. So that's why quasi contract is very important, right? So there are 5 situations of quasi contract as mentioned under section 68 to 72, right? So first, likewise, even in the absence of a contract, certain social relationships give rise to certain specific obligations to be performed by certain persons. These are called as quasi-contract, as they create some obligation, as in the case of a regular contract. Even if there are no such essential elements of contract enforceability by law, but certain social relationship give rise to certain specific obligations to be performed by certain persons. These are called quasi-contract, which are mentioned under section 68 to 72. Okay, so quasi-contracts are based on the principles of equity, justice and good science. Remember, quasi-contracts are based on the principles of equity, justice and good science. And firstly, quasi-contract are such contract which are the right always for money, and generally, though not always, but liquidated sum of money. And secondly, it does not arise from any agreement between the parties concerned, but the obligation is imposed by law. ओके, बहुत सिचुएशन है जहाँ एग्रीमेंट ना होने के बाद भी आज पर इम्पोज बाय लॉ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे 5 सिचुएशन के अंदर. सो देन थर्डली, द राइट्स अवेलेबल आर नॉट एगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट एगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन और persons who are committed or who are eligible for it. So in this respect, it resembles to a contractual right. Okay, so 3 conditions. First, such a right is always a right to money, and generally, though not always, but a liquidated sum of money. Then secondly, it does not arise from any agreement between the parties concerned, but the obligation is imposed by law. And thirdly, the rights available are not against all the world, but against a particular person or persons only. So in this respect, it resembles to a contractual right. Right. So this is called quasi contract and their essential meaning. Then the 5 situations, circumstances identified as quasi contract. First and number 1, claim for necessaries supplied to persons incapable of contracting as per section 68. Claim for necessaries supplied to persons incapable of contracting means
अगर कोई माइनर के साथ कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड as we know that minor is incapable of contracting. Okay, so if contract made between minor, it will be void of initials, means void of initio. But that's why quasi contract uh, is applicable here. Claim for necessary supply to person incapable of contracting means अगर एक मेजर ने एक माइनर के लिए कुछ नेसेसरी सप्लाई करा किया है, in that case such person will be claim the price from the person's property, means minor's estate वो claim कर सकता है from minor's estate. Okay, claim for necessaries supply to persons incapable of contracting. In case of idiot also same claim applicable. इडियट मीन्स ऑन साउंड माइंड, जो ऑन साउंड माइंड है अगर वो इसके उसके साथ अगर एग्रीमेंट हुआ है, इन दैट केस अगर कुछ एक्सपेंसेस और क्लेम अगर कुछ एक्सपेंसेस किया है मेजर ने, इन दैट केस ऑल्सो क्लेम कैन बी मेड फ्रॉम idiot person's estate, right? So any person supplying necessaries of life to persons who are incapable of contracting is entitled to claim the price from the other person's property or estate, you can say. Similarly, where money is paid to such persons for purchase of necessaries, in that case reimbursement can be claimed. जो भी खर्चा हुआ है माइनर के द्वारा वो सब रिफंड हो सकता है. देन नंबर टू, right to recover money paid for another person. As per section 769, right to recover money paid for another person means अगर a person who is liable to pay and not paid, and on behalf of that person, if another person pay, then such another person will be entitled to reimburse such pay. Okay, a person who has been paid a sum of money which another person is obliged to pay, in that case that person is entitled to be reimbursed by that other person for, with condition that the payment has been made by him to protect his own interest, right? Right to recover money paid for another person as per section 69. इसका मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए था लेकिन आपके बदले में मैंने वही टैक्स दिया गवर्नमेंट को, इन दैट केस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है. अगर एंड आई एम liable to refund such money to my friend who actually if my right to recover money paid for another person means अगर मैंने on behalf of my friend अगर मैंने कुछ टैक्स गवर्नमेंट को दिया है on behalf of my friend, then I must be reimbursed such money from my friend. Okay, so right to recover money paid for another person as per section 69 means a person who has paid a sum of money which another person is obliged to pay is entitled to be reimbursed by that other person provided that the expenses has been made by him to protect his own interest, right? Then number 3, section 70, very interesting, obligation of persons enjoying benefits of non-gratuitous act. Obligation of person enjoying benefits of non-gratuitous act as per section 70. So non-gratuitous means what? Gratuitous means where free consent are available or advantages or any benefits paid freely or with free consent. But non-gratuitous means where consideration involved. Remember, non-gratuitous act. Gratuitous means which are paid, benefits are paid through free consent. But in case of non-gratuitous, there are consideration involved. So if
consideration involved. In that case, obligation of person enjoying benefits of non-gratuitous act. In that case, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoy the benefit thereof. In that case, the latter is bound to pay compensation to the farmer in respect of or to restore the thing so done or delivered. Okay, अगर एक पर्सन ने नॉन ग्रेचुइटियस बेनिफिट को एंजॉय किया है, इन दैट केस सच पर्सन लाइबल टू रिफंड रिस्टोर सच मनी टू द ओरिजिनल पर्सन एज पर सेक्शन 70. Okay, so 7 as per section 70 means where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoy the benefit thereof. In that case, the latter is bound to pay compensation to the farmer in respect of or to restore the thing so done or delivered. ये कहता है एज पर सेक्शन 70 ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट. Then number 4, section 71. This is also very important. Responsibility of finder of goods as per section 71. Responsibility of finder of goods मतलब आपका डायमंड लॉस्ट हो गया है और मुझे मिल गया है आपका डायमंड. इन दैट केस माई ओब्लिगेशन इज टू रिफंड सच डायमंड टू यू. अगर मैंने उस डायमंड को आपको देने में बहुत टाइम लगा दिया आपको पाने के लिए मगर नहीं पाया, इन दैट केस इफ आई सेल दैट डायमंड एंड लेटर ऑन अगर आपने मुझे ढूंढ कर पा लिया और बोले कि मेरा डायमंड दे दो, मैंने कहा मैंने तो वो डायमंड को सेल कर दिया हूँ, इन दैट केस एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, अराइजेस ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दैट केस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है एंड आई एम लाइबल टू रिफंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डायमंड. एंड अगर मैंने कुछ एक्सपेंसेस किया है उस डायमंड के लिए टू यू नो find the true owner, to find the true owner, in that case such excess expenses will be reimbursed. Okay, so as per responsibility of finder of goods as per section 71 means a person who finds goods belonging to another person and takes them into his custody is subject to same responsibility as if he were a bailey. If he were a bailey means if मैंने अगर आपका डायमंड को पाया है तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको रिफंड करने के लिए. अगर मैंने कुछ एक्सेस खर्चा किया है, इन दैट केस वो एक्सेस खर्चा मैंने जो ओनर है, एक्चुअल ओनर है, मैं उनसे नेसेसरी क्लेम कर सकता हूँ, वो रिफंड कर सकता है वो एक्सेस एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय मी टू फाइंड द ओनर, ट्रू ओनर. सो responsibility of finder of goods falling under section 71. Responsibility of finder of goods falling under section 71. Then number 5, last and most important, liability for money paid or thing delivered by mistake or by coercion. Liability for money paid or thing delivered by mistake or by coercion as per section 72. So here coercion means illegal or by force, illegal or by force. अगर कुछ मनी और थिंग डिलीवर हो गया है मिस्टेकली, ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन मीन्स और बाय फोर्स, राइट, इन दैट केस मस्ट रीपे और रिटर्न इट इन रिटर्न इट. दैट मीन्स अगर मेरा दोस्त ने मुझे 2 लाख देना चाहिए था लेकिन वो गलती में ये दे दिया, 2 लाख देना चाहिए था मेरा दोस्त ने मुझे, बट इंस्टेड ऑफ दैट ही हैज़ पेड मी रुपीज 3 लाख. सो इन दैट केस द एक्सेस मनी ऑफ रुपीज 1 लाख
जो कि मिस्टेक में मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया विल बी रिफंडेड बाय मी टू हिम। मैं वो 1 लाख रुपीज़ को रिफंड करूंगा मेरे दोस्त को। ओके, सो लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और बाय क्वेश्चन falling under section 72 means a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay or return it। अगर मेरे पास ये पैसा एक्सेस पैसा आ गया है, 3 लाख आ गया है 2 लाख बदले में, इन दैट केस द एक्सेस ऑफ 1 लाख मस्ट बी रिफंड टू माई फ्रेंड। ओके, सो दिस इज mentioned under section 72 liability for money paid or thing delivered by mistake or by coercion। Okay, so this is it all about quasi contract। you just need to remember all the important point 1 claim for necessary supply to persons incapable of contracting as per section 68 means incapable of contracting कौन हो सकते हैं? माइनर हो सकते हैं, इडियोटिक हो सकते हैं, जो कि ऑन साउंड माइंड हो सकते हैं। इसके साथ अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन दैट केस द अगर कुछ खर्चा ने मेजर ने किए हैं, वो लाइबल हो, वो एलिजिबल होंगे रिफंड होने के लिए, पाने के लिए। ओके, देन नंबर 2 राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन फॉलिंग अंडर सेक्शन 69। देन Number 3 obligation of persons enjoying benefits of non-gratuitous act as per section 70। as per section 70 gratuitous means free consent, जो benefit मिला है freely, but non-gratuitous means where consideration are involved, right? Then number 4 responsibility of finder of goods as per section 71 arises a quasi contract। ट्रू ओनर को जो क्लेम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71 मैंने समझाया था आपको। ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वेयर ए बेली, राइट? देन नंबर 5 लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और बाय कर्सन एज पर सेक्शन 72। बाय कर्सन मीन्स बाय फोर्स और इलीगल। Okay, so this is it all about quasi contract। you just need to remember the important points and also all the sections, section 68 to 72, section 68 to 72 5 sections and most important 5 sections need to remember। 10 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आपको सेक्शन पता है, एंड पॉइंट अगर आपने सिर्फ पॉइंट भी लिख कर भी आ जाओ तो भी आपको आउट ऑफ मार्क आ जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सर्टन सोशल रिलेशनशिप गिव राइज टू सर्टन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस टू बी परफॉर्म बाय सर्टन पर्सन्स। दीज आर कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट as they create some obligations as in the case of regular contract। Then quasi contract are based on the principles of equity, justice and good conscience। equity, justice and good conscience, right? Then what are the salient features of quasi contract? Firstly and most important, such a right is always a right to money and generally, though not always, but a liquidated sum of money। this is the first and most important essential features। Then secondly, it does not arise from any agreement between the parties but imposed by law, second। And third, the rights available are not against all the world but against a specific persons only। Okay, so this is it। you just need to remember all such important points and meaning। thank you so much for your time and thank you so much for your support। happy studying।